Women are the real architects of society. Their strength in totality contributes in the making of an ideal family, ideal community, and an ideal state. Nation building can never be complete without the involvement of women, as they are the building blocks of any nation. An empowered and educated woman is capable of contributing towards a country's overall growth and progress. Women empowerment is essential to ensure the sustainable development of any country. Women constitute roughly 50% of India's population. This creates great opportunities to engage them to a greater extent in activities of national interest. But the realm of women empowerment in India is limited to just granting balanced rights to the women. This is resulting in a colossal waste of talent, slow economic growth, and underutilization of available human resources. To tap the untapped reservoir of talent and to provide socio-economic empowerment to women, the Adani Foundation launched Project Unnayan at Sarguja in Chhattisgarh. ये 250 महिलाओं का समूह सतत रोजगार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इन महिलाओं ने पिछले 4 वर्षों में इस ग्राम में रोजगार के साथ साथ स्वच्छता को ग्रामीणों के सांस्कृतिक की तरह जोड़ा है। Our focus was on empowerment of women because our institution understand very well that if the women are empowered, if the women are educated, the whole family will get educated, and the empowerment of a woman will lead to the other developmental fruits which would be of manifold benefiting to the community. Project Unnayan aims to empower rural women through their skill development for gainful economic engagement with dignity at the workplace and in the society. Project Unnayan also resonates with Sustainable Development Goal 5 of the United Nations of achieving gender equality and empowering women, and Sustainable Development Goal 8 of ensuring decent work and economic growth. The majority of population in Sarguja is tribal and is mainly dependent on the forest for their livelihood. Families were dependent on either daily wage work or seasonal agricultural labor work for earning. Lack of social entrepreneurial culture and addiction to liquor in the tribal community limited their opportunity for exploring and starting income-generating activities. That is why about 80% of the tribal families were in the BPL category. पहले हम लोग सिर्फ घर का काम करते थे, पहले दूसरों को हम लोग देखते थे तो हम लोग को भी लगता था कि हम लोग भी घर से बाहर निकले। अभी हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और 1-2 पैसा आ रहा है घर में। घर का स्थिति भी पहले से थोड़ा बेहतर है और पहले हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते थे, अब बहुत कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं बाहर निकल के। Women too contributed to their families' earning by working as daily wagers. Apart from doing agricultural labor work, women also collected non-timber forest produce and cultivated spices. But they were neither equipped with processing skills for value addition, nor did they have any entrepreneurial acumen. Sarguja also lacked the required infrastructure in schools, leading to increasing dropout rates at schools. पहले मैं अपने बच्चे की पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दे पाती थी। कोऑपरेटिव में जुड़ने के बाद सभी महिलाएं बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान देना चालू किए। Local heart and health facilities also lacked proper infrastructures. The Adani Foundation took an initiative to empower women through livelihood, enhancing vocational skills and life skills. Mahila Udyami Bahu Uddeshya Sahakari Samiti, called MUBS, a cooperative society, was formed by roping in 250 women from 5 peripheral villages of Adani Enterprises Limited. Natural Resources operated Parsa East and Keet Basan, coal mine in Surguja district of Chhattisgarh. This was done to provide livelihood support and to enhance the skills of self-help group members to improve their social status in villages. Various income-generating activities such as spice grinding,
sanitary pad production, vermin composting, midday meal, water filter plant operation, cloth bag stitching, white phenyl production and milk production through dairy development were started for economic gainful engagement of women and raising their income level. और अदानी फाउंडेशन जो इनको आर्थिक सहयोग दे रहा है तो इसका बहुत एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इनके जो एक आर्थिक स्टेटस की बात करें तो उस समय में ये क्या थे और आज इनके पास खेती जो हो रहा है, इनके पास खेती कहें या दूसरे संसाधन कहें, ये सारे चीज़ पहले की तुलना में हमें अधिक देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक इनकम की बात करें तो बहुत सारे इंटरप्राइजेस से जुड़ने के बाद इनका जो इनकम है वो भी पहले की तुलना में अब डबल हो गया है। मेरे गांव में अदानी फाउंडेशन के मार्गदर्शन से महिला सशक्तिकरण क्रांतिकारी रूप से हुआ है। Under Project Unnayan, awareness drives were conducted for members of the self-help groups on livelihood-related government schemes and government social campaigns. Members of the cooperative society were also provided training on record and bookkeeping, backward and forward linkages with regard to their income-generating activity. In addition to this, training was also provided on health and hygiene, home budgeting and judicious expenditures and stress management, and more importantly, a Udyami Sansadhan Kendra of the Cooperative Society, MUPS, was established to create a common center for training facilitation and enterprise management. मप्स में मसाला है, फिनाइल है और सैनिटरी नैपकिन है, डेयरी है, प्रोजेक्ट जीवन अमृत है और मिड डे मील की चलाते हैं, जिसमें हम लोगों ने 70 दीदी लोगों को रोजगार से जोड़े हुए हैं। Meet Savitri Armoa, a widow with 2 children, who was facing a hard time in making ends meet, as she was the only bread earner in the family. MUPS helped her in earning a respectable and regular livelihood and made her economically independent. She is now working as the in charge of MUPS white phenyl and hand wash production unit and also as a village coordinator for making villagers aware of the benefits of maintaining sanitation and hygiene by using white phenyl and hand wash. Through this, she is successfully meeting all her financial needs. आज मैं अदानी फाउंडेशन के सहयोग से महिला उद्यमी बहुउद्देशीय सहकारी समिति में जुड़ी हूँ। उसमें फिनाइल प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ और मेरा एक अच्छा आय का साधन बन गया है और आज मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम अदानी विद्या मंदिर में पढ़ा पा रही हूँ और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधार कर ली हूँ। और पहले मुझे दूसरों से सहयोग लेना पड़ता था और आज मैं खुद अपने में आत्मनिर्भर हो गई हूँ। Project Unnayan by the Adani Foundation is not only making women financially independent, but is also contributing in their education. Meet Mrs. Bandhan Porte, who is a graduate, but completing her education was never easy for her. She was only 12th pass when she got married. She wanted to pursue her graduation, but due to her financial situation, she had to discontinue her studies. MUPS helped her to fulfill her dream of completing her higher studies. She joined MUPS and learned clothes stitching at the training center. Later, she got employed at the MUPS cloth bag stitching unit and water filter plant. She started earning and simultaneously continued her studies and completed her graduation. हमारे महिलाएं जो हैं सिलाई सेंटर में बैग बनाते हैं, मास्क है, यूनिफॉर्म भी सिलाई करते हैं। ऐसे जो महिलाओं का जितना भी आभूषण है वो पूरा आभूषण हम लोग ने यहाँ पे तैयार करते हैं और तैयार करने के बाद हम लोग को यहाँ का जो आवक है वो बहुत अच्छा ही हम लोग का आय अर्जन है। MUPS, by empowering women, has also reduced the addiction of liquor in the tribal community. Miss Jyoti used to make liquor for her livelihood. Her husband was an alcoholic and their economic condition was troublesome. They could not even afford to send their 2 children to school.
But once she got an economic engagement with MUBS, she started growing green fodder grass at MUBS Organic Green Fodder Cultivation Farm for household animals and Gokul Dham Dairy under the project Gokul Dham. Jyoti, having improved her financial condition, is now sending her children to school. काम धंधा नहीं मिले तो मैं मुँह दारू बनाए लाए तो कपरेटिव में जुड़ी हूँ तो मुँह दारू बनाए ले छोड़ दें और कपरेटिव में काम करे जाता हूँ गोकुल धाम में काम करे जाता हूँ हम घर के रोजी रोटी चला थे. Project Unnayan by the Adani Foundation has contributed immensely in the economic and social upliftment of women in Sarguja. Women earning merely 500 rupees per month prior to MUBS coming into being are now earning an average income of rupees 5,000 per month after getting associated with MUBS. Women associated with MUBS are ensuring quality education for their children through private coaching classes. The school dropout rate in government schools of 15 villages has gone down drastically. There is a significant growth in the use of sanitary pads as more than 80% of women and girls in 50 villages of Sarguja district covered by MUBS for social marketing of sanitary pads are using sanitary pads for safe menstrual hygiene. पहले कपड़ा इस्तेमाल करते थे जिससे बीमारी का डर था, लेकिन जब से MUBS समिति के महिलाओं ने मुस्कान पैड बनाना शुरू की हैं तब से हम मुस्कान पैड इस्तेमाल कर रहे हैं और महिलाओं को मुस्कान पैड का इस्तेमाल करने का जागरूक कर रहे हैं जिससे बीमारी का खतरा न रहे. मैं MUBS का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सैनिटरी पैड को बनाया ही, इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को उसके उपयोग के प्रति जागरूक किया है. More than 80% households in 15 peripheral villages of Parsa East and Keet Basan are using sanitary toilets and using white phenyl for cleaning the toilets. Today, the entire Parsa village with population of about 2,000 has adopted organic farming practices. About 300 self-help groups in Sarguja district have ensured incremental income through the sale of MUBS products such as white phenyl, sanitary pads, vermicompost, spices and milk-based products. Not just for women, but MUBS has also created income-generating opportunities for the male section of the society through balanced cattle feed making and with the sale and cultivation of Napier grass as green fodder. पहले कुछ नहीं था, अभी कंपनी के आने से बहुत कुछ हुआ. किसानों को भी बीज और जैविक खाद मिल रहा है और बेचने का दिक्कत नहीं है, यहीं कोऑपरेटिव खरीद लेता है. Continuing with their aim of empowering women, the Adani Foundation launched another project, Project Kamdhenu at Tiroda in Maharashtra. Continuing with their aim of empowering women, the Adani Foundation launched another project, Project Kamdhenu at Tiroda in Maharashtra. Tiroda is a taluka in Gondia district of Maharashtra with around 122 villages under it. The main occupation of people here was farming and agriculture. Project Kamdhenu aims to develop dairy farming as an additional source of livelihood for the villagers and especially for the women in the area by improving the productivity of the livestock. तिरोडा एरिया में जियोग्राफिकल कंडीशन जो है वो डेयरी के लिए फेवरेबल है और बहुत सारे फार्मर्स हैं डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं. उसको देखते हुए अदानी फाउंडेशन ने 2017 में लाइफस्टॉक डेवलपमेंट का काम शुरू किया. ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, फॉडर कल्टिवेशन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट, वैक्सीनेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट कैंप, ये काम शुरू किया. To enhance dairy farming and to give a reasonable milk rate to dairy farmers, TFPCL with the support of the Adani Foundation established Anuradha Dairy Milk Collection and bulk milk cooling centers at 3 locations, Chikali, Bardipar and Kavalevda, and additional new
22 milk collection centers with the support of women self-help groups of Mahila Arthik Vikas Mahamandal, Gondia in 22 villages. All these 22 centers are completely owned and managed by women SHGs of Mahila Arthik Vikas Mahamandal. महिला आर्थिक विकास महामंडल अदानी फाउंडेशन के वजह से हमको एक रोज़गार मिल गया और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा का योगदान मिल गया। हम अपने घर का योगदान इस वजह से बराबर कर रहे हैं और हमको रोजी का साधन भी मिल गया। Extensive support, guidance and training was provided to women self-help groups for household dairy, silage making, distribution of cattle feeds, livestock development and fodder cultivation by the Adani Foundation. अब डेयरी इतनी अच्छी चल रही है और कस्टमर भी बहुत खुश है। अभी जिनके यहाँ भैंसा नहीं थी, गैया नहीं थी, अब वो भी लोग लेने बैठे और दूध जिसका 2 लीटर 4 लीटर दूध था, अब वो 6 लीटर 8 लीटर दूध ला रहे हैं। Anuradha Dairy is established by Tiroda Farmers Producer Company to purchase milk from farmers and village-level milk collection centers. The collected milk is being supplied to Panchmahal Dairy, a subsidiary of Amul. Looking at the successful dairy operations and benefit to farmers in the Tiroda block, the government district administration now intends to open one milk chilling plant of 30 KLPD in Tiroda block and milk collection centers in Tiroda, Gondia and Goregaon blocks through Anuradha Dairy. Mavim, with the support of the Adani Foundation. यहाँ दलाल लोग सक्रिय थे और वो दूध संकलन करते करते 20 से 25 रुपए का रेट दे रहे थे। आज वही रेट 50 रुपए 55 रुपए तक के किसानों को मिल रहा है एंड दुगना रेट मिल रहा है। यही उद्देश्य हमारे इस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का था कि किसानों को इस माध्यम से कैसा फायदा पहुंचाया जाए। Under Project Kamdhenu, the productivity of local cattle was also enhanced through artificial insemination to improve the quality of indigenous milk breeding cattle. 2 livestock development centers, also known as LDCs, were developed at Kherbodi and Kavalevada. These LDCs are providing free of cost services of artificial insemination, SSSAI, PD, CP, cattle health checkup camps including infertility, deworming vaccination and fodder cultivation in 26 villages. The Adani Foundation also played a crucial role in the tie-up of Anuradha Dairy with Panchmahal Dairy for regular supply of collected milk. हमारे यहाँ 8-10 गैया भैंसी है और हमको अदानी की तरफ से बरसीम सीड मिला है। वो सीड हमने अपने बंदी में लगाया है और वो अभी काट के खिलाते हैं। तो खिलाने के बाद हमारे दूध में वृद्धि हुई है। जो दूध हमारे पास पहले 40 लीटर था वो अभी 50-52 लीटर तक के गया है। Project Kamdhenu is motivating, inspiring and supporting women in their entrepreneurial journey. This is Revati Harishankar Patle, in charge of the milk collection cum bulk milk cooling center, Chikli. A few months earlier, she was just a housewife and was fully dependent on her husband's income. Today, she is gainfully employed and is earning well, which has helped her to raise her family's living standards. मैं मिल्क कलेक्शन सेंटर में लगी हूँ। सुबह 7 बजे आती हूँ, 7 बजे से 10 बजे तक मिल्क कलेक्शन करती हूँ। शाम को भी 7 बजे से रात के 10 बजे तक मिल्क कलेक्शन करती हूँ। एक तो मेरा टाइम भी अच्छा जा रहा है, ऊपर से मुझे 2 पैसा मिल रहा है, तो मैं अपने परिवार के आर्थिक मदद में हेल्प कर रही हूँ, बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर रही हूँ। इसके लिए मैं अदानी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी पत्नी डेयरी में काम कर रही है, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं डेयरी में काम करने दे रहा हूँ, वैसे ही लोग भी आगे आके अपने पत्नियों को काम करने देंगे। समाज के अंदर लेडीजों की ये काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी, समाज बढ़ेगा। Rekha Bhimraj Bison is a widow. After her husband's death, her financial condition was unstable. Her life took a U-turn ever since she started working at the milk collection cum bulk milk cooling center Bardipar. She has now become financially independent and economically stable. मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी अडानी फाउंडेशन का, क्योंकि उन्हीं के वजह से मुझे ये काम मिला। गांव के लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और हमारे जैसे लोगों के लिए भी। हमें एक नई
पहचान भी मिल गई। हमारे घर की परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वैसे मेरी मम्मी को अदानी फाउंडेशन की तरफ से एक काम मिल गया, अनुराधा डेयरी में मतलब काम मिला। उसकी वजह से हम घर की परिस्थिति भी ठीक है और हमको मतलब स्कूल वगैरह की फीस के लिए भी कुछ टेंशन नहीं रहती। Project Kamdhenu has not only provided extra income to 3,678 farmers, but it has also engaged a large women workforce, making them financially independent. Project Kamdhenu generated employment for 78 women, SHG members and youth and provided opportunities of entrepreneurship to more than 22 women self-help groups through milk collection centers. After expansion of the project, 130 KLPD milk chilling center and more than 90 village level centers will be established in the coming months, and 450 to 500 women SHG members and 40 to 45 youth will get opportunities of entrepreneurship, and more than 3,500 additional dairy farmers will get benefits. The project also resulted in enhanced sustainable livestock farming activities, silage making and fodder cultivation practices. With increased milk production and dairy-based enterprises, Tiroda in Maharashtra is now moving rapidly on the path of progress and prosperity. पहले मिलता था मेरे को हफ्ते का 500-600 रुपये हफ्ते का मिलता था। फिर दूध का रेट अच्छा बढ़ने से मैंने एक भैंसा और लिया। अभी मेरे हफ्ते का 3,000 रुपये हफ्ते का पेमेंट मिल रहा है। ऊपर से रेट वेट भी अच्छा मिल रहा है। अभी आगे मैं और लेने की एक भैंसा मेरी इच्छा है और The Adani Foundation is working relentlessly for the growth and sustainable development of women in rural communities. Through its various interventions, the foundation is committed to transforming the lives of women by infusing skills which eventually will play a major role in changing their social and economic status. The Adani Foundation, transforming lives by infusing skills. एक कदम महिला सशक्तिकरण की ओर, 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 एक कदम महिला सशक्तिकरण की ओर।